वो कितने शराफत से आ गए सब लोग, एकदम मतलब इतना सीरियस सा दिखते हुए, यू नो। आई फील कि आप जिसके बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकते थे, हमारे डायरेक्टर शशांक खेतान जी, प्लीज आप भी आ जाइए। गिव इट अप फॉर हमारे डायरेक्टर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड जिसके बिना बन ही नहीं सकती थी, धर्मा प्रोडक्शन, अपूर्वा जी आप भी प्लीज आइए। गिव इट अप फॉर देम, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स। क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, ओ तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया। ऑल्सो मैं जानता हूँ कि आजकल ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे थोड़ी सी नोकझोंक करते हैं पीआर वाले। बट टुडे एक्चुअली लेट्स डू इट लिटिल ओल्ड स्कूल। यू ऑल गो अनअडल्टरेटेड, जो पूछना है पूछ लीजिए आप जानवी जी से, वो जवाब देंगी। जानवी ने आने से पहले कहा था कि प्लीज जो भी सवाल हो दे हैव टू बी ओनली पर्सनल। गो अहेड। आएंगे, वहां पे भी आएंगे। शादी कब हो रही है आपकी? मुझे वरुण भाई सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सान्या भी टीम का हिस्सा है, वो देख। सान्या टीम का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, सबसे बेस्ट बाल उनकी है। हाँ। सान्या का एक हम लोग लेके आए थे, एक ताकि हम सान्या मिस ना मैम को करें, लेकर आए हैं, एक सेकंड। क्या एक लेके आए? कटआउट लेके आए थे हम उसका, ताकि हम मिस ना करें। वी शुड जस्ट Okay. कीप ऑन स्टेज ओनली, ताकि लोग ज्यादा। हाँ, ये आ गई आ गई। हाँ, अनन्या सान्या के लिए मेरी है। जोरदार तालियां, लेडीज ये एंड जेंटलमैन, ऑफ अनन्या कोर्स। मेरी गिव इट अप फॉर। ये आ गई वाह सान्या। वाह 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 वाह। पहली नहीं, बार इनको- सबसे जल्दी तैयार हुई है क्योंकि बाल मेकअप कुछ नहीं करना पड़ा, एज इट इज आ गई है। मैं मेरे साथ रख लूं इससे, मेरे को तो हाँ नहीं बोला इसने मुझे। अनन्या मेरी है भाई। मेरे को ना क्यों बोला तुमने? सान्या नेशनल अवार्ड जीता इसलिए। चल कमीने। आप लोग एक पिक्चर ये कर लेते, फिर आगे बढ़ाते हैं बात को, है ना? लेट्स We good? थैंक यू। हम लोग फोटोज बाद में जाने के पहले We'll do it, we'll do it. लेट्स स्टार्ट विद द Q&A ओनली। वरुण, हाँ, कुछ एक सवाल। आई नो यार, तेरे को तू सबसे पूछते है, अक्षय कुमार सर से, अरशद वासी से, यू वर देयर आल्सो ना? तो अभी इनको पूछने दे। पूछ लीजिए, इट्स आप ऑल लोग पूछो। या ओवर टू यू। चलिए, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? Who wants to start? अरे भाई तुम डीएज हो रहे हो उधर, दे दो। गिव हिम अ माइक ना। अरुण को बोलने दो भाई, बहुत सालों से बोला नहीं है उसने। So you go ahead. I'll go to Arun sir. I'll come to My you. question is to Hello. Varun. आइए, पूछिए। हाय। वरुण सबको स्टेज पे बुला लिया, बट व्हाट अबाउट योर फेवरेट करण जौहर? वेयर इज ही? वेयर इज करण जौहर सर? देखिए, करण जौहर जी को आप बर्थडे पे देखते हो, मुंडन पे देखते हो, शादी पे देखते हो, किसी के सुहागरात पे देखते हो, तो हमने बोला कि आज उनको एक ब्रेक दे देते। बट द ट्रूथ इज दिस, दैट आई थिंक ही इज टेकन अ डिसीजन। आई एम सेइंग इट आउट लाउड, आई एम पुटिंग इट आउट। He's taken a decision that now, henceforth, कि जो उनकी फिल्में लॉन्च होगी, he will not come for the launches because he wants to let the team get all the limelight, because उनको लगता नहीं है, सही भी है, कि जब वो आते हैं तो पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है. So henceforth you won't see him, and if he comes for any other film ना, then make it a controversy. Hello, hi, this is Meghna here from Instant Bollywood. Here. Hi, how are you? मेरा सवाल सुशांत सर से है. सर, हमने आपकी सारी फिल्में देखी है, स्पेशली आई लव बद्रीनाथ एंड हमटी शर्मा. तो मैं क्या ये कंसिडर कर सकती हूँ कि ये बद्री मतलब दुल्हनिया का ही पार्ट है? और दुल्हनिया का पार्ट नहीं है, मेरी जो स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल है उसका पार्ट है. और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं, उन्हें हंसा सकूं. और आई थिंक आज के माहौल में हंसना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लोगों को थिएटर में आके एंजॉय करना, हंसना. तो जिस हिसाब से मेरी स्टोरी टेलिंग रही है, एक फैमिली एंटरटेनर, लोग मस्ती कर रहे हैं, शादी का एक माहौल है. आई थिंक आई गॉट लकी इन मैरिज. तो मुझे ऐसा लगता है सबकी शादी होनी चाहिए. और यहाँ पर स्टेज में कुछ लोग हैं जिनकी शादी होनी चाहिए, तो बस यहीं से शुरुआत हो रही है. तो सर ऐसा कह सकते हैं कि दुल्हनिया 3 आ सकती है? ज़रूर आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है. उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ज़रूर आ सकती है. ओके सर, थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट सवाल मेरा रोहित सर से है. हाय Hi रोहित, ma'am. व्हाट्स Hi. अप? Very good. मेरा सवाल ये है कि सर आप इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा मूव हमने देखा पनवाड़ी में, बट मेरा ये सवाल है कि बिजुरिया के लिए आपने सर को क्यों नहीं बोला कि एक आधा मूव मैं कर लूँ? क्योंकि आई थिंक जी नहीं, बिजुरिया एक्चुअली मैम, सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट. मुझे बहुत मज़ा आया पनवाड़ी पर डांस करके. आई थिंक बिजुरिया द रीज़न, एंड ये काफ़ी पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं हुआ ये वो, बट आई फील लाइक द मेन रीज़न वाज दैट इट डजंट गो विद द नैरेटिव. आई थिंक कुछ चीज़ें नैरेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न. बट थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड कि आपको पसंद आया. थैंक यू.
Here, guys. Yeah, Rohit here. Hi. Shashank, great. Rohit, you have to ask the first question to Rohit only. Yeah. Now, you can't. First to the director, great trailer, big fan of all your films. To all of you, you know, आपने कहा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो here I am. आप लोग इंटरव्यूज करेंगे क्या होता है, you know, इतना मजा आएगा इंटरव्यूज करने में, because एक फिल्म आती है, सपोज सैयारा आई, उन्होंने इंटरव्यूज नहीं किए, सबको लगता है कि अरे हम भी नहीं करेंगे. वरुण, जानवी, रोहित, आप लोग इंटरव्यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? इसका जवाब सानिया देगी. सानिया नहीं सुनाई दिया. No, I feel Apurva, why don't you answer this? We will do interviews at the right time. I think everything's one step at a time, or everything will happen. This is a fun film, or you can see there's a lot of fun happening here. So we'll speak about all the fun also. Right. आपके साथ भी बहुत मस्ती करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप सब लोग यहाँ हैं. अभी पूछिए ना जो भी सवाल पूछना है आपको. ये एक तरह से इंटरव्यू तो है. नहीं, ये है ना. पूछिए क्या पूछना है आपको, यही पूछना था. इतना खुला मंच दे दिया उसने, जो पूछना है पूछ लो यार. मतलब Hi, Varun. इससे बड़. This side. Which side? This side. Left. Hi, ma'am. That Left. side. Hi, Priya. Hi. Priya here from Hi, Bazooka Priya. Media. Bazooka? अच्छा, ये this is owned by that. No, the owner's Sajid name is Qureshi. Sajid Qureshi. Owned by Sajid Qureshi. not Amba. हाँ, वो नहीं. No, this channel owned by Sajid Qureshi actually. Varun, why do you have investor details of people, man? No, Let her ask a question. His name is Ambani, they had told me. No. ये अलग इसका investor detail का काम चल रहा है. No, it's Sorry. channel owned by Sajid Qureshi actually. Yeah. तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई. ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आपने सैलरी का भी एक टैग दे दिया. तुम तो 26 है तो मतलब बहुत ही लोअर मिडिल क्लास. लेकिन मुझे लिटरली ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत फनी लगा, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मतलब हिट जाने वाली है, और गाने तो हिट चले ही गए हैं. केसारी, पवन, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के जब भी ये लोग कोई भी गाना बॉलीवुड में गाते हैं तो एक देसी कनेक्ट आ जाता है और ऑडियंस अपने आप थिरकने लगती है. तो आपको लगता है कि ये देसी तड़का कलेक्शन को और बढ़ाएगा? 100% आई थिंक एक तरीके से जो मुझे लगता है जो संगीत होता है वो हमारे देश को जोड़ने का काम करते हैं. क्योंकि जैसे आप पंजाबी म्यूजिक देख लो, अभी आपको पंजाबी समझ में आती है या नहीं आती है, बट आप इंजॉय करते हो, हर किसी आर्टिस्ट के गाने इंजॉय करते हो. सेम विद भोजपुरी म्यूजिक. एंड ये लोग इतने बड़े स्टार्स है. केसरिया का नाम लिया था आपने, एंड पवन सिंह जी का, मासूम शर्मा जी फ्रॉम हरियाणा एज वेल. सो दे ओनली ऐड टू अस, एंड हम लोग बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमारे पिक्चर में गाने के लिए अग्री किया. एंड पनवाड़ी, लाइक आई थिंक एवरीवन हैज कॉट ऑन टू दिस सॉन्ग. इट्स लाइक द हार्ट ऑफ आवर सॉन्ग, एंड आई थिंक पूरी कास्ट है वो गाने में. सो यू गेट टू सी रोहित shirtless also in that song eventually. और ये बार का प्रेप किया 3 महीने. 6 महीने 15 महीने 6 महीने कुछ नहीं खाया, एकदम सूखे से हो गए थे बेचारे. ये सारी अपनी डायलॉग्स की रिहर्सल्स भी जिम में जाके करता था. इसने तोड़ मारा था जिम होटल का. वाह. तो वरुण, क्या हम आगे भी ऐसी कोलैब देख सकते हैं आपकी आने वाली फिल्मों में भी? 100%. I think if you see my family's association also with Bhojpuri cinema, if you remember, there was a song in Raja Babu only called Sarkai Log Hatiya Jhada Lage. तो तब से at least my dad has always had a liking towards that genre of music. You know, let's UP wala ठुमका लगाओ. So always he's had that thing, and I kind of love it as well. मुझे तो बहुत मजा आता है, and मैं बहुत टाइम से ये करना चाहता था किसी फिल्म में. And luckily we got the opportunity with Panwadi, and Dada agreed. We were really helped by Asim Dhyani, who's a music supervisor at Dharma. He helped us get और there. गणेश मास्टर जी की कोरियोग्राफी है तो मतलब वो तो कमाल है ही. Thank you. Hi, Pallavi here. Hi Pallavi. Pallavi from Pop Diaries. My question is to Rohit and Apurva sir. So first I'll go with Apurva sir. Apurva sir, this is your 5th film with Shashank, and it has been quite an interesting between Dharma check and Shashank. Yes. नहीं, हमने कुछ साथ में प्रोड्यूस भी करी है तो हम Yes, अपना actually, गिनती करें कि हमने कितना काम किया you know, साथ. as the production house. So what is it like? What do you feel, and how do you see this collaboration? I would love to know. So, you know, Shashank is firstly family, I have to say. He's been 10 years with us. He's given us some of our most memorable films, like you all know, Humpty Sharma,
Badrinath Ki Dulhania, then we had Govinda Naam Mera, now of course Sunny Sir. And Shashank, I wanted to ask you, of course, you worked with Janvi Dharak and Varun in his initial films. Tell me, when you worked with them today, like how much have they evolved as actors? Tell us some good facts about them, like how they've grown up as actors. मैं सच तो नहीं बता पाऊंगा आपको मैम इस स्टेज पे नो बट इट्स बीन ग्रेट फन आई थिंक स्पेशली जानवी बिकॉज जानवी को मैं पहली बार जब उसके साथ काम किया था हम लोग धड़क पे साथ में काम किया था और इतने वक्त के बाद आफ्टर सो मच टाइम आई गॉट टू वर्क विथ हर एंड ऑफ कोर्स शी हैड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो इट वाज समथिंग न्यू फॉर हर बिकॉज दिस जॉनर इज नॉट समथिंग शी हैज डन a lot with. So actually that's where Varun and my combination, and because we have done so much work together, hamari thodi bahut initial choices of films are also very similar. We enjoy watching that kind of films. So it really helped because we can get into a room, start rehearsing together and push Janvi to kind of express her side. And I think when people see the film, they'll realize the comic side she has and the commercial so-called एक सुर होता है commercial cinema का और कभी-कभी it takes time to just let it come out. So I think I was really impressed by that and I think just collaborating, we've always rehearsed a lot. हम लोग हमेशा बहुत rehearsals करते हैं. कभी-कभी एक नोशन है कि कॉमेडी फिल्म हो या इस जो जॉनर की फिल्म हो इसमें रिहर्सल की ज़रूरत नहीं होती है बट इनफैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज इसमें टाइमिंग ऑफ गया तो आपका जोक लैंड नहीं करता है तो आई थिंक दैट एक्सरसाइज वाज ग्रेट फन और वरुण के साथ एक्चुअली कभी फील नहीं होता है कि हमने साथ में काम नहीं किया है बिकॉज इवन व्हेन वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर वी आर बेसिकली कॉलिंग ईच अदर अप एवरी डे और वरुण की एक खासियत है वो जो भी फिल्म शूट कर रहा होता है वो शॉट खत्म करने के बाद मुझे फ़ोन करके फिर परफॉर्म करता है तो वो जब आउटडोर शूट पे जाता है जैसे वो आई रिमेंबर बवाल की शूट के लिए कहीं गया था ही लैंडेड फ्रॉम द एयरपोर्ट मैं आ गया हूँ मेरे घर आ जा हम लोग घर पे थे देन इज परफॉर्म द एंटायर शेड्यूल इन फ्रंट ऑफ मी तो हम लाइक बॉस ये क्या हो रहा है तो ये हमारा रिश्ता है तो कभी ऐसा फील नहीं होता है कि वी हैव नॉट वर्क टुगेदर बिसाइड्स मूवीज वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स आवर फैमिलीज नो ईच अदर वेरी वेल तो देयर वाज नेवर एनी डिस्कम्फर्ट और दैट तो एज आई सेड इसका एवोल्यूशन मैं रोज़ देख रहा था बिकॉज ये रोज़ परफॉर्म कर रहा होता है अभी हाल में बॉर्डर शूट कर रहा था तो वहाँ से फ़ोन कर रहा था आज मैंने ये किया सनी पाजी के साथ आज मैंने ये किया दिलजीत पाजी के साथ तो ऐसे ठीक है यार मेरे को भी को प्रोड्यूसर बना दे इस फिल्म में बिकॉज मेरा भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है Hi, this is Mohit Rana here to the left. Hi. Hi. Left. Mohit from Filmi Mantra. So I have to say something to Varun and Janvi both. मेरी एक आदत है बड़ी अजीब सी कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ किसी इवेंट में तो मैं सुबह सोच के जाता हूँ गेस करके जाता हूँ कि जो सेलेब्स आएंगे वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे किस कलर के तो थैंक यू सो मच जानवी एंड वरुण फॉर वेयरिंग द सेम कलर्स like I'm wearing this I don't know yeah pink we all you won't believe it I messaged Varun इस इवेंट से पहले और मैंने पूछा कि क्या पहन रहे हो और उन्होंने कहा कि मैं एक पिंक इंडियन कुर्ता पहना हूँ and we really didn't plan wearing pink together इत्तेफाक से हो गया और मेरा क्वेश्चन ये है कि when you're working with a team like this जो इतनी फनी है इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्यार है when you were shooting बिजुरिया how was that experience and did you miss Sania and Rohit I'll miss them मतलब वो लोग हैं उधर so I'll just make it clear guys so the film has like it's a festival it's a marriage there are बहुत मेहंदी होती है संगीत होती है बहुत सारी चीज़ें होती है so according to the screenplay things are moving you know तो ये बिजुरिया जहाँ पिक्चर में आती है according to the screenplay we needed this part then Panwadi comes somewhere we have another song Ish Manzoor we have a love song so बहुत गाने हैं वहाँ पे in fact I have rehearsal videos with Rohit and Sania doing proof दे दे भाई बाहर हाँ मेरे को देना ही पड़ेगा क्यों कटवाया तुमने इनका डांसिंग क्या है यार रोहित यही जाएगा but I have to tell you all one thing genuinely not because Rohit is here he's been such a wonderful person to work with he's such a team player he cares about things which are not only related to him and he's just so giving in a scene and I've had a lot of scenes actually I think I have more scenes with you than Janvi. Yeah we have the most we have more scenes what are you saying I have more scenes with you I have the most scenes how can you forget you all will be shocked when you see the final edit ये लोग खुश हो जा रहे हैं इनको पता ही नहीं है no but I genuinely enjoyed working with him in fact I told him this before we started the film because I've been watching Mismatched and I'm a fan of Mismatched and that's where I had so even I ship Rishi and Dimple. Why was there a pause? No, there was a pause because we don't know what's going to happen in the next season. Yeah. So anyway, so even I really shipped them and so I was very, very excited and very, very thrilled when Rohit said yes to doing this film and there's lots in store right now if you all are feeling कि there is थोड़ा सा tension है ये है वो है तो रखो वो पिक्चर में उसी को लेके जाओ and then see the film because there are a lot of twists and turns especially with
his character in this film and what happens over there and how he impacts Sunny's life, how Sunny impacts his life. So yeah, and Sanya, I mean, what to say? I've been a fan of hers since a long time. Since I saw I mean, I'm acting like she's here, but she is. Since she did Dangal, I thought she's an unbelievable actor, and I want to work lots more with her. And I think she's someone who's just like a natural talent. You know, very few of these come through, and she's one of them. She's just amazing. Thank you. क्या बात है। रोहित पर एक मिनट पहले मैं चाहूंगा वरुण के लिए तालियां हो जो रोहित और सान्या पे निबंध इसने अभी के अभी बोला है खड़े हो गए ऑसम कोमल जी कुछ तो पूछिए आप कलेक्शंस को छोड़ के कुछ भी पूछ लीजिए आप गाइस एक सेकंड गाइस मेरे को दूसरी बार की मौका नहीं मिलेगा I have to say this to Rohit I love you थैंक यू एक मेरे को बात बता तूने उन दो से सवाल पूछा है इसको आई लव यू बोला मेरे में फंगस लगी है या मैं तेरे को दिखा नहीं गलत कलर का कुर्ता पहन के आया नहीं मैं तू एक बार मेरे लिए भी कुछ थैंक यू सो मच मुझे पता था मैं तो ऐसी मस्ती ले रहा था तेरी आई लाइक योर पिंक शर्ट या आस्क आप लोग सेम हाइट के पूछ लो Hi, this is Sohail over here from Instant Bollywood. Big congratulations to you. शशांक जैसे आपने कहा था कि you feel very happy जब लोगों के आप शादी करवाते हो और आपने थोड़ा जानवी की तरफ भी आपने हाँ तो जानवी से मैं जानना चाहूँगा कि शादी को लेकर आप क्या कहोगे एक्चुअली माहौल भी उस तरह का है माहौल ही शादी वाला है हाँ जी शादी को लेकर मेरे विचार क्या है नहीं बहुत विचार और अभी क्या प्लानिंग है आपकी प्लानिंग नहीं अभी पहले मेरी प्लानिंग अभी सिर्फ फिल्मों को लेकर है शादी की प्लानिंग के लिए बहुत टाइम है सर सॉरी अच्छा शशांक और ये जो फिल्म है सनी संस्कारी की मतलब तुलसी कुमारी ट्विस्टर है एक्चुअली तो ये जानबूझ के इस तरह से रखा गया कि बिकॉज जैसे हम लोग कहते हैं कि ये फिल्म कौन सी देखने जा रहे हैं अरे कल पनवेल जाना है वैसी वाली जो होता है ना तो What was the reason behind this? I think बहुत सिंपल रीजन था हमें कैची टाइटल चाहिए था कहानी दो किरदारों के बारे में है और जैसा कि है कि अब आप पूछेंगे कि जेम्स बॉन्ड का नाम जेम्स बॉन्ड क्यों है क्योंकि इट्स अ फन नेम इट्स अ कैची नेम आई थिंक दैट वाज द आइडिया इट काइंड ऑफ कन्वेड द स्टोरी वेरी वेल ऑफ कि ये दो किरदारों की एक लव स्टोरी है उनके बारे में है साथ में फैमिली है एंटरटेनर है तो और इसमें ज़्यादा हमने ऐसा कोई डीप सोच नहीं था इट वाज जस्ट टू हाईलाइट द कैरेक्टर्स एंड हैव फन विद देम बट डू यू बिलीव द टाइटल आल्सो एनहांसेस द फिल्म एक्चुअली इवन व्हेन इट बिकम्स कैची होता है तो लोगों एब्सोल्युटली आई बिलीव द नेम ऑफ कैरेक्टर्स एंड द टाइटल हैज अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन हाउ यू काइंड ऑफ इंटरप्रेट इट बिकॉज DDLJ अगर आप पकड़ेंगे तो आई थिंक राज और सिमरन वो दो नाम लेजेंडरी हो जाते हैं तो कैरेक्टर के नाम से बहुत फर्क पड़ता है Hi guys, this side. Hi. Yeah, hi, Nawaz Kochra here from Screen. So Janvi, I wanted to ask you this, since your last film was also a romantic film, and usually what happens is as actors, when you all portray romantic characters on screen, has there ever been a character that you've taken a love lesson from and applied it to your personal life? I'd also like to have inputs from Rohit and Varun on this, but Janvi, we'll start with you. I think between both the films also there's a good amount of difference because that I guess was a romantic comedy but this is a proper family entertainer. Of course there's romance and comedy and all of that but it's a front-footed family entertainer. लेकिन क्या lessons मैंने दोनों किरदारों से सीखे हैं मैं तुलसी कुमारी के बारे में बात करती हूँ एक्चुअली मैंने यही सीखा है कि किसी की शादी पे जाके उसे तोड़ने की कोशिश मत करो पाप लगेगा I have a question. Okay, let ma'am ask. हाँ मैंने बहुत गेट क्रैश किया है actually. Okay, I have a question. Yeah. There's so much talk about star fees and entourage, etc. So Janvi, Rohit, or Varun. I am his staff in this film. Who's the one who has the biggest in this film, entourage? I was Varun's staff. Entourage. The biggest entourage in this movie is by Manish. Yeah, that's true. Manish travels with the biggest entourage in the world. How many people? Who? How many? 7, 8. Manish at least has 8-9 people traveling over ये there. लोग मेरे को मजाक करते हैं मैं चल के आता था कहते हैं अर्जुन वेली की तरह चल के आता पीछे 8 लोग आते हैं लेकिन वो 8 लोग इनके एडीज ही होते हैं जो मुझे सीन पे लेके आ रहे थे कहते पाजी आपका डायलॉग है नहीं कुछ बना लो तो ये मेरा एंटोurage है फिल्म का ही बाकी तो आई थिंक ये जानता ही है शशांक I'll be very honest I think you're asking me this question at a wrong production because like Dharma is home for me it'll always be so when I work in a film which is produced by Dharma, I honestly feel like it's my film. I'm making it. So it doesn't matter at that time if there's a van or there's no van, if there's
I mean, I also want to say this on record that Dharma does take care of the actors in the best way. Only once you work with Dharma and then when you work outside, you realize that shit, they took so much care of us. They really support talent, regardless of who stands, nothing. There's a lot of equality. And not just talent, I think every technician, Also, everyone on set. You know, these conversations happen that the hero has a bigger room or the heroine has a smaller room or this and that. In Dharma production, that's See, I think never Entourage happens. का issue वहीं start होता है जहाँ पहले से ही ये होता है इसको देना है और उसको नहीं देना है. That is where I feel वो एक्टर्स में एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. इसको अंतराज मिला, उसको नहीं मिला. यहाँ पे आई थिंक सबको बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया गया है. I think Apurva is not agreeing with us only. Why don't you speak? सर आप ही तारीफ कर रहे हैं हम. Apurva is going to call you and say नहीं नहीं थोड़ा तो कटना चाहिए. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. So Varun, how many people do you take with you? So I have my Dada, Krishna and Altaf. These two are with me since the beginning. And I have Mubarak, who is my security guy. And Kumar, who's my spot. And that's it. I had Manoj in my team for years. God bless his soul. He's not anymore. And that's it. My managers are here, Monica and Ishita, but I never get my managers on set. Because my father made this rule that no managers will come on set. So on his set, I never got managers, so I could never get them on. So you don't take them anywhere? No, I never take them on any other set. No, Janvi? I have to add that, you know, these guys have been extraordinary. I mean, I have to say, Varun at times has called me and said, listen, why are we spending so much on this song? The set is looking so huge. I think all of them treat this as family, and we are really blessed to have all of them in our movies. Well, they're all filmmakers' kids. No, and also I think they understand it. You know, they treat Dharma as their own film, as their own home, and I think that's amazing. And So ma'am, we've never had genuinely, these problems at all. issues like entourages or whatever we are discussing right now, I think these are always ever evolving. There was a time when there were lesser of them. There was a time when more of them came in. As we are growing, as we are evolving, as we are understanding budgets and recoveries of movies better, I think everyone is cognizant of the fact that they need to change. I don't think so anyone is so bullheaded in saying that, hey, my film's not working, but I still want so many people to travel with me. Everyone's a bit cognizant of the fact that we need to ensure that the film's made in a certain budget, that the producer has a fair chance to recover it. And ultimately, we are all ensuring that the money spent is visible on screen and not necessarily off it. So I think it's an evolving, no film is going to be the same. From film to film, decisions change. And I think everyone's aware now because the market is so dynamic as we speak. It's changing so much. I think people are taking actions based on that. I think it's very important, like heading into the future, that you put producers first now. It's quite clear, I think, in the landscape of how cinema is performing now, how OTT prices are fluctuating, satellite prices are fluctuating. It's so important that you put producers first because ultimately they are the ones with the biggest risk appetite or the biggest risk that they're taking. So I think it's a bit going back to how things were maybe in the past, you know, how people used to make films. Hopefully nobody has to, you know, go to those lengths like in the past because there are horror stories from then also. No, there are. I've seen it in my childhood. I've seen friends' houses lose houses. I'm not lying about this. So I genuinely feel that moving ahead, it has to be producers first and people have to make a film together. They have to make a film together and that's quite easy when you're working with Shashank or with Dharma and especially Karan. So Janvi, what do you feel about it? How many people do you take? And honestly, it's the same as him. No, just answer the question honestly. What do you mean? Varun, I'll hit you. Just take the name of all the 9 people. See, Boniji said in an interview that she pays for her own vanity van also. Not on this And film. then he trolled you about Wimbledon also. My father only keeps trolling me. Anyway, no, not on this film. On this film, of course, like he said, Dharma's like family and they take care of all of us so much. Not just us, but even our entire team. I have to say one thing though. He is so over-cognizant of all of these expenses. आपने पनवाड़ी गाना देखा ही होगा ना? And I think that was our biggest song, our biggest set. So before every shot, Varun would come up to each of us and say, पता है कितना डाला इस गाने में? पता है कितनी की set है? Now kill it. तो ये pressure में हम नाच रहे थे पूरे दिन. तो हाँ, that's how responsible he is, and he's inculcated that in us also now through this song. Has your dad also? For sure. I think because Dad wanted the song to be more expensive. No, but of course I've seen him make movies and I've seen everything that a producer deals with. So I've always
in my head, tried to be as helpful and as less of a burden as possible on my producers. And Apurva, you were going to say something. No, I was just saying that I think they, all of them are very, very cognizant, and like I couldn't have put it better than Shashank. I said we've had the most amazing time working with all of them. Like I said, Varun used to genuinely keep calling me. I said, "To kaam karna, don't worry about the set now. This is an important song." He was genuinely concerned so many times, and it's great to see actors who are just not looking at their performance, but they're also concerned holistically about the film and where it lands. And I think all of these people are, the younger generation is just so much more cognizant of all these things. They understand it, and they're all friends. They're friends, they're actors, they all have done enough work now to understand how things are evolving, and they are as concerned as us. So genuinely, it's not been a concern. All right, we're taking one last question. Okay, जी. एक सेकंड. Film personalities are approaching the court for personality rights. Like Karan has approached Mr. Bachchan, Abhishek, Aishwarya. Your take on it? How important it is today for securing or protecting your personality rights? From Varun to Apurva, if you can answer that question. Because of AI coming in, how very important is to secure the rights? Your take, Varun and Janvi, and of course Apurva. See, technology, I think, does come with responsibility. It can be really helpful, but it can be really misused as well. Right now, we are all having fun with it, but it can. So I feel there will need to be some law and regulations surrounding it, especially so that at least actors and artists don't start getting misused. Their rights don't start getting misused, because we can reach a period where you don't need actors at all. Then you can just create. So I think actors have to come with an X factor to deliver, and if you have that X factor, then you have to safeguard it. So I believe you should safeguard it. I mean, I think I'll just answer this one. Sorry. I mean, I think not just for actors, I think for every technician I've seen over the course of the last couple of months even, before when you'd get a narration or you'd come in for a meeting, it would take a lot of time before you see storyboards or you do physical look tests so you know what the zone of the film is, the character. But right now, in a second, they can show you an image of you being the character. They can show you exactly what the film is going to look like. They can do renders of... No, but more than misuse, my concern is that there's so many jobs that would have taken, I guess, X amount of more time to deliver these variables, these sketches, and maybe would have added something more personal. But right now, more people are, I guess, relying on the technological aspect of it, which I guess might be more financially, monetarily conducive. But I guess you can say I'm old-fashioned, and I really want to preserve what a creative human being has to offer. Mr. Bachchan is also. I don't know. See, I don't know what the technicalities or the legalities of how to go about that is, but I know when I see even right now on social media how there are so many AI images against my will being circulated by mainstream media portals as legitimate images. And I think maybe me and you can tell that it's AI, but the common man will think, हाँ ये तो ये पहन के पहुंच गई, ये तो इसके, which is, so I don't know what the protocol is. There's no AI in this film, na Shashank? In this film, there's no AI. नहीं बस इसमें भी AI का तो बजट अलग ही हो जाएगा. Hello. Komal ji, कुछ so that's all we have for you, ladies and gentlemen. No, wait. One question. I want Komal ji to ask one question. Komal ji knows us all from many years, even before we started our journeys. I just want to ask this. You said, that Karan Johar's banner is like home production. When will the time come when you consider all artists, not just you, every artist considers every production as a home production and rationalizes the entourage? I don't think entourage is such a big issue as is being made out. No film has flopped because star entourages were so huge. No film ever flops because of that. But I'm just saying that rationalization will come if every actor starts considering every production as his own. So what are your thoughts on that? No, but can I say that I think that he is like that with every... maybe he said it sentimentally. General, yeah. Yeah, but you do think every production house is... And what about you, Janvi? I do, but I would like to come... but I would want to say that all producers also have to behave as family members then. Yeah. That also doesn't happen, and I'm sure, Komal, you know that. We can keep blaming actors that is this the... Because obviously, कंधे तो actor के कंधे पे आता है ना. Eventually, जो... बिल तो लीड के नाम पे ही फटता है, and this has been, and then stories come out, blind articles come out, trolling happens, all the muck is thrown on them. Everything else is good when we are building up, having fun, but then the muck is thrown on that person only.
But I have to say, you need good producers also. That is also 100% actors also should behave themselves much, much, much better. I'm saying, but producers also have to go into it with a little less, with a more friendly and a more family-like environment. I think if you create that, actors will say yes. And I'm saying if an actor doesn't want to do it still, mat lo usko. No, and Don't work with them, I feel. I'm going to add that Janvi has been extraordinary also. You know, we just went to Homebound just now. We went to Toronto International Festival for Homebound. We were there for 2 days and we said, listen, we can't take anybody with us. It's just going to be the actors and us. And we were literally 5 or 6 of us and the hair and makeup would all be arranged there. And